Good evening, everyone. Warm welcome to your own YouTube channel, that is exaMnorM. It's the one-stop solution for all your regulatory bodies exam preparation. And today I welcome you all in the next session, which we call it as Finance Norm. Basically, it's a finance current affairs session, which is live on Tuesday, Thursday, as well as Saturday at 5 p.m. And in this particular session, we discuss all the important updates related to RBI, SEBI, as well as other regulatory bodies, and even we discuss the banking and financial news as well. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can start the discussion without any further delay. And today, it's a SEBI day, guys. We have 3 updates from SEBI. First, we'll discuss that, and then we will be moving ahead, and we have one more update from RBI as well. I hope you all have shared the link of this session with your friends. I hope you all are eager and you want me to start with the discussion. Just give me yes sir so that we can begin the session. Guys, मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों से the enthusiasm with which you were studying earlier has fallen down. I don't know why, but guys, this is the right time. Utilize it in the right direction. Otherwise, बाद में पछताओगे कि काश तब पढ़ लेते तो सही होता, क्योंकि आज हम मार्च के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर चुके हैं. And remember that if we are expecting the examination for RBI Grade B to be happening in month of July, तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर RBI Grade B का एग्जामिनेशन अगर RBI Grade B का फेज 1 एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाता तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद है कि शायद हो सकता है इस बार RBI Grade A के वैकेंसीज के साथ भी आ जाए. So this is how we are planning for you guys, and I'm pretty sure those who are enrolled in our courses, they must be enjoying the course classes as well. कहीं ना कहीं कुछ extra, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा, and you must be enjoying. So let's get started, guys. Here we go with the first question, which is from the previous session. The question says, consider the following statement. Consider the following statement regarding the directions on private placement of equity. Directions of private placement of equity shares by NUCFDC. सोच के बताओ जरा क्या आंसर होगा. पहला पॉइंट है NUCFDC must have board approved policy for resource planning covering planning horizon and periodicity of private placement. That is correct. The private placement offer can be made only to the urban cooperative banks. That is correct. NUCFDC is permitted to extend loans against the security of its own shares to subscribing urban cooperative banks. That is not correct. है ना? Moving on to the fourth point, the proceeds raised through equity must be used for the purpose of consistent with the NUCFDC mandate approved by RBI. That is correct. Fifth statement, it is 15 days, it is not 30 days. I guess ये question हमने last class में कर लिया था, if I'm not wrong. We have covered this question in the last class itself. I have done some mistake, I guess. एक मिनट का समय दीजिएगा. Just give me a second. ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. I don't know. मे बी चलो कोई बात नहीं, अब तो चेंज हो भी नहीं पाएगा. Whatsoever it is, let's move on and let's start with the discussion for the current day. अच्छा, लास्ट क्लास में फॉरेक्स का था. ठीक है, फिर माय बैड, मुझे ऐसा लगा पढ़ते हुए कि शायद ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. NUCFDC से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं दैट आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. आई होप जो भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, ऑल दी स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन रिटन, दे आर क्रिस्टल क्लियर. तो आप ध्यान से देखिए, 15 दिन का टाइम है, इट्स नॉट 30 डेज. तो यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, इसको आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट में, एक्सटेंड लोन अगेंस्ट देयर ओन सिक्योरिटीज. नो सर, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड देयर लोन अगेंस्ट देयर ओन सिक्योरिटीज. सो कीपिंग दैट इन माइंड, 1, 2 and 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. ओके, फेयर एनफ. चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो अगर हम आज के सेशन की शुरुआत करें, तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेबी, और सेबी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं. लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज. What do you understand by the word SEBI? The answer should be, so whenever we talk about or whenever we use this term SEBI, it basically means Security and Exchange Board of India. और अगर मैं Security and Exchange
बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आज सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, कुछ सर्कुलर्स, कुछ नोटिफिकेशंस दिए हैं जिनको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। हाँ, मुझे भी लगा कि हमने गलत क्वेश्चन कवर किया, सो आई हैव अपडेटेड द क्वेश्चन। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विच हैज हैपेंड, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिपोर्ट्स दैट इज BSR, सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्विकली ट्राई टू गिव मी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन Q3 ऑफ 2025-26। अगर आपको याद हो, हमने हाफ अप्रैल टू दिसंबर का डेटा भी देखा और Q3 का डेटा भी देखा। द करंट अकाउंट डेफिसिट हैज वाइडन्ड कंपेयर्ड विद Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के हिसाब से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? It has increased or decreased? Give me the answer, guys. What should be the correct answer? सोच के बताना। The merchandise trade deficit narrowed significantly during the quarter. Net services receipt increased due to growth in computer and business services. Net outgo on primary income declined. NRI deposits remain a stable source of external finance. अगर हम इन सारे points को देखें, which point is going to be the correct answer? प्लीज गो थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली। तो अगर मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स के आंसर दूं, तो जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट सेज द करंट अकाउंट डेफिसिट हैज वाइडन्ड कंपेयर्ड विद Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर हम पिछले साल के Q3 के साथ कंपेयर करें तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? सर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सर वो पहले के मुकाबले क्या हुआ है? कम हुआ है। वो पहले के मुकाबले क्या हुआ है? कम हुआ है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट हैज वाइडन्ड इन Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो इन Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर के अगर हम बात करते हैं, तो पिछले अगर हम क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो परसेंटेज थी, पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो परसेंटेज थी इन दी 2024-25 इट वाज 1.1% और 2025-26 में इट इज 1.3%। तो अगर ये 1.3% हुआ है फ्रॉम 1.1, दैट मींस इट हैज इंक्रीज। वाइडन का मतलब इंक्रीज, नॉट नैरोड। आई रेड इट रॉन्ग। तो 1.3% की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 1.3% की जो वैल्यू थी दैट वाज $13.2 बिलियन, और अगर मैं 1.1% की वैल्यू की बात करूं सो दैट वाज $11.3 बिलियन। तो भैया पहली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बढ़े दूसरी स्टेटमेंट की ओर, तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? सर दूसरी स्टेटमेंट कहती है द मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली। नो सर, दिस इज रॉन्ग। जो आपका मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट है इट हैज नॉट नैरोड। प्लीज 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 मेक दिस पॉइंट क्लियर। The merchandise trade deficit did not narrow, instead it has widened sharply. पिछली बार ये $79.3 बिलियन था, now it is $93.6 बिलियन। आप लोग पता कहां गलती कर रहे हैं? You are thinking the data अप्रैल टू दिसंबर 2025 को कंपेयर कर रहे हैं अप्रैल टू दिसंबर 2024। दिस इज द थर्ड क्वार्टर डेटा गाइस। आई गेस ये शायद आप लोग गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर्स। तो एक बार प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू विद द कंटेंट वंस अगेन। अगर मैं नेट सर्विसेज की बात करूं तो नेट सर्विसेज इन इंडिया आर पॉजिटिव, दैट मींस आर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन आर इंपोर्ट्स। तो जो हमारे नेट सर्विसेज है दैट इज पॉजिटिव। अब अगर हम बात करते हैं नेट सर्विसेज की, अगर हम बात करते हैं नेट सर्विसेज की, द नेट सर्विसेज रिसीट इंक्रीज ड्यू टू ग्रोथ इन कंप्यूटर एंड द बिजनेस सर्विसेज, दैट इज करेक्ट। नेट आउटगो ऑन प्राइमरी इनकम डिक्लाइन। आउटगो ऑन प्राइमरी इनकम में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी सर? अगर हम प्राइमरी इनकम की बात करें, इफ यू रिमेंबर क्लियरली, तो प्राइमरी इनकम में वी टॉक्ड अबाउट the returns or the profits which you are earning on your investment as well as the returns which you are earning by providing the labor. तो उसके हिसाब से we are talking about the word that is primary income. तो अगर मैं उस प्राइमरी इनकम को ध्यान में रखूं, अगर मैं उस प्राइमरी इनकम के फॉर्मेट को ध्यान में रखूं, तो उसके हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है सर? नेट सर्विसेज रिसीव ड्यू टू, दैट इज करेक्ट। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या? नेट आउटगो ऑन द प्राइमरी इनकम डिक्लाइंड। सर नेट आउटगो ऑन द प्राइमरी इनकम हैज डिक्लाइंड। पहले ये आउटगो कितना था सर? लास्ट क्वार्टर में दिस आउटगो वाज $16.4 बिलियन एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू $12.2 बिलियन। सो दिस इज करेक्ट। NRI deposits they remain the stable
सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यस। अगर मैं एनआरआई डिपॉजिट्स की बात करूं, अभी भी एनआरआई डिपॉजिट ठीक ठाक रहा इस साल। इस क्वार्टर में इट वाज $5.1 बिलियन, लास्ट ईयर same quarter it was around $3.2 billion, so that is also correct. So keeping that in mind, 1345 is correct. So A option is the correct answer for the given one. I'm really very sorry for taking the wrong question initially, but it's okay. Ant bhala to sab bhala, that is the part. Chalo ji, let's get started. So आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन में हमारे पास, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सेबी रिलेटेड 2 बड़े अपडेट्स हैं, 3 बड़े अपडेट्स हैं और एक आरबीआई रिलेटेड अपडेट है। जल्दी से उन दोनों अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहली अपडेट क्या है? सेबी सर्कुलर ऑन वॉलंटरी लॉक इन और डेबिट फ्रीज फैसिलिटी इन म्यूचुअल फंड फोलियोज। म्यूचुअल फंड फोलियोज का क्या मतलब हुआ? सो व्हेनेवर वी यूज दिस वर्ड म्यूचुअल फंड, आई होप ये वर्ड एक ऐसा पॉइंट है जो आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, जल्दी से अगर बताऊं तो सर, म्यूचुअल फंड का मतलब है व्हेन द फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड दोज फंड्स व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स, द पूल्ड अमाउंट, द पूल्ड फंड is invested by someone or by an authority which is more efficient in investing in the stock market. तो वो पैसा आपके behalf पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, and that investment is done in different sectors, in different industries, in different caps, so that diversification हो आपके इन्वेस्टमेंट में, and there should be diversification should be there in the investment, and there should be minimum risk on investment. तो इन सारी चीजों को देखते हुए पोर्टफोलियो फंड, म्यूचुअल फंड्स, दे हैव गेन्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद अगर हम देखें कि देयर वाज अ इमेंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया coming directly from the foreign nations, because of which our stock market has performed really very well, जिसकी वजह से returns in the stock market has increased. And keeping that in mind, every individual in the country, or I would say especially the Gen Zs, or I would say the latest generations, they are much aware of stock market, and they are investing their funds in stock market rather than in the deposits of the bank, because of which the deposit growth is declining in comparison to the credit growth. इन सारे points को दिमाग में रखते हुए RBI ने क्या कहा, SEBI ने क्या कहा कि सर, as you are yourself admitting that yes, the mutual fund investment has increased over the period of time, and due to increase in mutual fund investment, one of the major reason of this increase is digitalization. कि भैया अब digitalization भी तो हो गया, you are easy, or it's very easy to open up a mutual fund or to subscribe to a mutual fund scheme. You can easily invest the fund, जिससे कहीं ना कहीं वो investment increase हुई, और वो इतनी increase हो गई कि asset under management is around 80 lakh करोड़ रुपीस। अब अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हो रही है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली विद दिस देयर इज अ रिस्क एक ही है डिजिटलाइजेशन की वजह से। द रिस्क वी हैव इज साइबर रिस्क, द रिस्क वी हैव इज साइबर रिस्क और फ्रॉड विच कैन हैपन ड्यू टू द ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन ऑफ दीज सर्विसेज, ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए सेबी ने एक बात कही, बड़ी सिंपल सी बात है। सेबी ने कहा कि अगर आप कस्टमर हैं and you are opting for a mutual fund scheme, और ये जो mutual fund scheme है, this mutual fund scheme is going to mature after 5 years, कि भैया 5 साल के बाद आपकी स्कीम मैच्योर हो जाएगी, but you are allowed to make the premature withdrawals, or you are allowed to I would say liquidate your folios whenever required. तो इस सिनेरियो में this individual says that due to this digitalization, due to this cyber security, due to this cyber fraud, अगर किसी और ने मेरे behalf पर मेरे म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया, मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकाल लिया, तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में सेबी इज सेइंग नो वरीज, वी आर गिविंग यू अ लॉक इन सिनेरियो. लॉक इन सिनेरियो मींस द मोमेंट यू सब्सक्राइब टू अ स्कीम, whether it is closed, open, or maybe a hybrid scheme, you can opt for a lock-in facility. और lock-in facility में अगर आपने कहा, let's say the lock-in facility is 3 years, for next 3 years, through any means, your mutual fund scheme cannot be liquidated. Through any means, your mutual fund schemes cannot be liquidated. That is the basic agenda for which this initiative has been taken.
समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई कहानी। तो आरबीआई ने सेबी ने रिसेंटली ऑन 6th of March, दैट इज येस्टरडे, क्या अनाउंस किया सर? दे हैव कम अप विद वॉलंटरी लॉक इन और डेबिट फ्रीज फैसिलिटी फॉर द म्यूचुअल फंड फोलियोज। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? इज द पॉइंट क्लियर टिल नाउ? शैल आई मूव अहेड? क्या हम इसे डिस्कस करें इन डिटेल? आई होप द बेसिक पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। I hope the basic part is clear to everybody. Do reply in the comment section, please. Give me a thumbs up if it is clear. Harman, I hope आपने चेक किया होगा. The data which you are giving, that is for 9 months. It's not for 3 months which I am talking about. ठीक है? Clear है? चलो. अब इसमें एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो पॉइंट समझ नहीं आएगा तो आगे काफी सारी कंफ्यूजन आ सकती हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस सिंपल पॉइंट क्विकली एंड आफ्टर दैट डिस्कशन वी विल रीड द न्यूज, वी विल डिस्कस द न्यूज विच इज वेरी इजी टू कवर। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ना जब मैं इस न्यूज को आपके लिए कवर कर रहा था, आई केम अप विद द थॉट कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड, देन दिस debit, or I would say this voluntary lock-in, is valid on which scheme? Is it valid on closed mutual fund scheme, or is it valid on open mutual fund scheme, or is it valid on hybrid mutual fund scheme? Then I realized that this is not scheme wise, rather this is folio wise. It's not scheme wise, rather it is portfolio oriented, it is not scheme oriented. What does it basically means? It means that a folio is basically similar to a bank account number for mutual fund investor. This folio is basically similar to a bank account number for a mutual fund investor. ठीक है, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए it's same as a bank account number. It is unique number which is assigned by the asset management company. तो ये जो folio है, it is basically assigned to you by the asset management company, the company which is managing asset on your behalf, so that you can track all your investments. Of the investor with that AMC. So single folio can contain multiple mutual fund scheme. तो एक ही folio में you can have multiple mutual fund schemes in one single portfolio, or in the single portfolio you may have different types of funds. You may have equity funds, you may have debt funds, you may have hybrid funds. That is also possible. And even from a single portfolio you can get into different types of transactions like purchases or systematic investment plan or maybe redemption as well as switches. तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये है कि मेरा जो पोर्टफोलियो नंबर है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो इट इंक्लूड्स इक्विटी फंड स्कीम ए, दिस ओनली इंक्लूड debt fund scheme B, this only include hybrid fund scheme C. So all these schemes they exist within the same folio. So if I talk about folio level lock mechanism, it means the lock mechanism works at folio level. It works at folio level. It is not working at scheme level. It is not working at scheme level. तो इसका मतलब ये है कि जो restriction है, it is placed on the entire portfolio. It is placed on the entire folio, not on an individual scheme. So once the debit freeze is activated, all schemes which are inside this particular account, which are inside this particular premises, will not be allowed to debit it. You can say that all the schemes will be frozen in terms of debit, in terms of redemption. Is this point clear? ये point समझ आ गया कि सर यहाँ पे ये जो facility है, it is not given to you folio wise. This facility is not given to you scheme wise. It is given for an account. अब आपका एक account है, एक unique number है, उस unique number में you have purchased different mutual fund schemes, और वो different mutual fund schemes are included in a single number. And if you are applying this folio lock, if you are applying this debit freeze, then it will be applicable to all the schemes which are related, which are linked, which are mapped to this particular folio. Is this point clear? If it is clear, just give me yes sir. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं इस न्यूज को अगर आगे बढ़ाऊं तो इस न्यूज के पीछे का लॉजिक क्या है? सर लॉजिक एक ही है कि ड्यू टू द ग्रोथ एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड,
unauthorized redemption request has increased, fraud account access has increased, identity theft is very common in online transaction, and cybersecurity risk is increasing. So in order to overcome this, few organizations they came together. In order to overcome this, few organizations they came together. The first organization which came together is, or which came in front, is obviously the needed organization. We call it as what? Sir, we call it as SEBI, that is Security and Exchange Board of India, which is the regulator of capital market. अगर मैं यहाँ पे सेबी की बात करूँ तो सेबी का रूल तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा if I talk about the other authorities, so SEBI, it is established as the regulatory framework which protect investors' interest. But what is this Association of Mutual Funds in India? Sir, Association of Mutual Funds in India, it serves as a industry body which represents all mutual fund asset management companies. So all the mutual fund or asset management companies, they are included. और आप ये कहो कि उन सबका जो यूनियन है, the way we have representatives of different organizations, different sectors, in a similar manner, AMFI, it serves as an industry body representing all the mutual fund asset management companies, and it is basically, AMFI has been entrusted with prescribing the detailed operational guidelines. So all the detailed operational guidelines will come up, not yet, but it will be coming from the AMFI. तो AMFI जो है वो पूरी डिटेल गाइडलाइन देगा, कितना लॉक इन हो सकता है, कब हो सकता है, कितने समय के लिए हो सकता है. All those details will come from there. Now the question is, so what is AMC? What is AMC? अगर मैं AMC की बात करूं, it is asset management company. These are the entities which are responsible for managing the mutual fund schemes. So the administrator investors handle investor servicing, as well as they update their statement of additional information and official websites to disclose how this freeze facility will work in the near future. That is going to be done. The next point we have is registrar and transfer agent. So registrar and transfer agent basically kya hai? So it is basically they maintain investor record and they process mutual fund transactions. They also play a very important role in enabling the debit freeze facility through their system. For example, we have CAMS, CAMS, we have KFIN technologies. They all are the examples of RTAs, that is registrar and transfer agents. These institutes, they work together, they work collectively to implement this lock-in format or debit freeze format on your portfolio or on your mutual fund folio account. The next question जो मैं पूछने वाला था, do AMFI has been recognized as self-regulatory organization for mutual funds by SEBI? Yes or no? So this is the answer which you are going to give me in the comment section after this session completes. Same, how is that number? एक एक करके यार आपके क्वेश्चंस लेता हूँ. What happens in a case when person is not able to invest regularly? अगर पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा रेगुलरली, देन इट्स ओके ना, इट्स ओके. आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी पेनल्टीज चार्जेस है या जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज इट इज, बट यू वोंट बी अलाउड टू विड्रॉ. आई होप इट इज क्लियर. टू एक्सपेंस, आर दे सिमिलर टू डीमैट अकाउंट? Are they similar to demat account? I would say these folio accounts, they are almost similar to demat accounts only, but in case of demat accounts, we have the securities in dematerialized form. Here we don't have the securities, rather we have the mutual fund scheme marked units which are related to your folio number. वहां पे तो share in the demat form is available, but here it's just the marking which is done. It is only the mapping which is done, or the units which have been referred over here. I hope it is clear. Next is, एक डीमैट अकाउंट का एक ही फोलियो होता है. क्लोज्ड, ओपन, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स. मीनिंग क्लोज्ड का मतलब है म्यूचुअल फंड, क्लोज्ड का मतलब है विच यू कैन अप्लाई फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम टुडे and it won't be available later on, and once the time period is complete, then you can redeem it. Open is a type of mutual fund scheme जहां पे आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कभी भी आप उस स्कीम में एग्जिट कर सकते हैं. दैट इज ओपन म्यूचुअल फंड स्कीम. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम का मतलब विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. Combination of two means today you can subscribe or you can exit. Now the same facility will be available after 1 month.
तो 1 महीने तक it will give you a feeling of closed scheme, and then after 1 month it will give you a feeling of open scheme for some period, for few days. That is basically hybrid scheme. I hope it is also clear to you. If maturity of each scheme is due, it's okay. अगर maturity किसी भी scheme की due है तो वहां जो debit होगा that will be automated debit. It's not the debit which is triggered by the account holder. So अगर account holder format पे अगर triggering है, that will not be allowed, but other which is genuinely on maturity part of time, that will be done for sure. I hope it is clear, Grav. It was a good question. Just want to ask, if one had locked in a period in his portfolio but later maybe some emergency need immediate liquidation. अभी इस पे ना clarity नहीं है नीरज. As I mentioned, AMFI will be coming up with much more clarity, and once that clarity, the rules will be out, I will be in a better position to explain it. मैं आपको explain कर रहा हूँ जो SEBI ने circular दिया, अभी AMFI ने इस पे कोई announcement नहीं की है. अगला जो point SEBI ने introduce किया related to the same, that is mutual fund central platform and its role. Mutual fund central platform was introduced by SEBI in the past. What is it? It is an interoperable digital platform that integrates services of different RTAs. अब मान लो कि आपके पास different registrar and transfer agents है, 1, 2, 3. अब उनका different login है, उनमें different आपकी credentials है, but now you can have a single window access of all your RTAs with the help of this mutual fund central. तो mutual fund central क्या है? Sir, it acts as a single window interface through which investor can manage mutual fund investment across multiple AMC. तो जो आपकी multiple AMCs में आपकी mutual fund investment है, that can be managed through a single window. तो mutual fund central will serve as a primary platform for activating or deactivating the debit facility. क्यों? क्योंकि सर ये जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल है, इससे आपकी सारी की सारी AMCs द्वारा प्रोवाइडेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स लिंक्ड है, और अगर आपने यहाँ पे लॉक इन लगा दिया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी स्कीम्स लिंक्ड है, नो स्कीम कैन बी विड्रॉन, नो स्कीम कैन बी डेबिटेड. What are the different types of mutual fund schemes which are covered? We have equity mutual fund. Equity mutual fund means when your investment is done into the equity fund. So equity funds invest primarily in the stocks and they are exposed to market volatility. It's quite obvious. So investor जिसके पास risk appetite ज़्यादा और returns ज़्यादा एस्पायर कर रहा है, उस investor के लिए mutual fund scheme, equity mutual fund scheme is good. Debit mutual fund schemes are, I would say, fixed income schemes where the investment is done in the government bonds, treasury bills, corporate bonds, where you get predefined fixed return. Hybrid mutual fund is a combination of equity as well as debt. Is it clear? Then we have liquid and money market funds. So liquid funds are frequently used for short-term cash management and they may experience frequent redemption. The debit freeze feature helps to protect such funds from unauthorized withdrawals. और उसके साथ साथ if I talk about these liquid and money market funds, they are very liquidity, or I would say they are liquid funds used for short-term cash management. And अगर उसके ऊपर आप debit freeze लगा देते हैं, that will safeguard your funds for a longer period. That is something which you need to remember. आपको पता है जो डीमैट और नॉन डीमैट फोलियोज है उनमें क्या डिफरेंस है? See, डीमैट basically means dematerialized form, which means the securities, the financial instruments you are talking about, they are available in dematerialized form. Non-demat means they are available in physical form. So demat mutual fund units, they are held in electronic form within the depository accounts maintained by NSDL or CDSL through depository participants. So these accounts, they are similar to those which are used for holding shares. ठीक है ना? तो जो आपके पास डीमैट अकाउंट है उसी का रेप्लिका is your demat folio account. But in case of mutual funds, we have the non-demat holdings as well. So non-demat holdings are maintained directly by the asset management company through statement of account folios. Investors, they receive periodic account statements reflecting their holding and transactions. So by covering both forms, SEBI ensures that the security measures, they protect all the categories of mutual fund investors. Now you can lock in on your demat account as well as on your non-demat holding depending upon the requirement. What is the eligibility? Who all are eligible?
whether you and me are eligible or not? The answer is yes. First condition is investor must have completed the KYC norms. If you have completed the KYC norm, you are eligible to opt lock-in facility for your folio account. Second is the folio must have valid email and registered mobile number. These requirements ensure that lock-in mechanism is accessible only to verified and authenticated investor. तो इसकी भी जरूरत क्यों है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि भैया जो भी ये लॉक इन कर रहा है क्या वो भी जेन्युइन है या नहीं. तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस you must have valid email as well as registered mobile number. If I talk about the financial transactions which are going to be affected after this lock-in, when mutual fund folio is locked, certain financial transactions involving debit of units are restricted. Certain financial transactions involving debit of units are restricted. Most significant affected transaction is redemption. You cannot redeem where investors sell their mutual units to receive cash. That will not be allowed. Another affected transaction is you cannot switch between the schemes. You cannot switch from one scheme to another, which is allowed generally, but in terms of lock-in or during the lock-in period, it won't be allowed. Next is systematic withdrawal plans or systematic transfer plans involving periodic debiting of units. They will not be allowed during this particular period. So the objective is to ensure that no unit can be debited without investors' approval during the time period when lock is activated. अब non-financial transactions कौन सी हैं? So these include updating personal details such as address, contact information or nominee details. They are the non-financial transactions during the lock-in period. So investor may also request account statement or updating the bank information. That is allowed. However, जो आपकी AMFI है will determine what all specific conditions are need to be fulfilled, and once the conditions are set by AMFI, we will be discussing the same news in much more detail. ठीक है, तो सिंपल है. कंक्लूजन क्या है सर? इस पूरी न्यूज का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि नाउ योर म्यूचुअल फंड schemes नहीं, your mutual fund folios, these are the accounts which maintain, which map, which links the mutual fund schemes, maybe the DMAT or maybe non-DMAT format. So on that you can enjoy lock-in option, and if you are exercising the lock-in option, it means no debit of your units can be done, no redemption of your units can be done in order to receive cash, no transfer or swapping of the schemes can be done during this lock-in period. This will give you one extra layer of safety to the investors. लेकिन ये एक्टिवेट कौन कराएगा? इन्वेस्टर खुद कराएगा. कैसे होगी एक्टिवेशन? So with the help of Mutual Fund Central, with the help of this platform, you can activate it. कितने टाइम के लिए एक्टिवेट हो सकता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या चार्जेस होंगे, क्या फॉर्मेट होगा? For that we have to wait for the details which are going to come from AMFI. So if the investor wishes to undo the lock-in before 3 years, is it possible? मैंने 3 years का नाम कहीं लिया? ग्रव, मैंने 3 years का कुछ नाम लिया अभी तक? 3 years आपने क्यों दिमाग में आया? क्योंकि अभी तक जो टाइमलाइंस हैं that have not been very clearly mentioned by AMC. So let's wait for the timelines from the AMC और उसके बाद we'll come up with this news once again. तो उसमें जो आपके डाउट्स हैं कट 4-5 चीजें वो मैं एक ही बार में एक ही न्यूज में कवर कर दूंगा. Is it clear? Now let's try to discuss a question on the same. Consider the following statement regarding the SEBI circular introducing the voluntary debit freeze facility for mutual fund folios. The facility allows investors to voluntarily lock their mutual fund folios so that no units can be debited until the folio is unlocked. That is correct. Second point, the facility applies only to the mutual fund units held in dematerialized. No sir, it is allowed for dematerialized as well as non-dematerialized form. In the first phase, the facility will be implemented through the interoperable platform. Yes sir, in the first phase, it will be implemented through Mutual Fund Central, which are operated through registrars and transfer agent. That is correct. Only investors who are KYC compliant, they have valid registered email ID and mobile number, they can activate it. That is correct. Association of Mutual Fund will prescribe the detailed process for locking and unlocking folios and identify transactions allowed during the lock-in period. That is also correct. So keeping that in mind, only the second statement is wrong, which means B statement 1, 3, 4, 5 are the correct answers for the given one. Is it clear to all?
Is it clear to all? Give me yes sir in the comment section if this news is clear so that I can move on to the next one. ठीक है जी. Let's go with the next news of the day. The next news talks about SEBI guidelines for custodian. SEBI guidelines for custodian. We have, I don't know whether you have heard this term or name, that is custodian or not. As the name suggests, custodian मतलब custody. Custodian का मतलब क्या है? Sir, it is custody. Custody मतलब anyone who is safeguarding our asset, our belongings, who is responsible for maintaining or providing the security to our assets on our behalf. We call it as custodian. Or custodian plays a really very important role in the security market, and in the security market or in the financial market, custodian is someone who is responsible to hold the securities either in demat form as well as, if available, in the non-demat format as well. अब कस्टोडियन का मेजर काम क्या है? सब मेजर काम वही है, आपको सर्विस देना. व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सर्विस कस्टोडियन इज गिविंग? दैट यू प्लीज park your securities with us, and against that security parking service we will be charging a fixed fees from you, and that fixed fees will be our source of income. But custodians, they are trying from past that they want to expand their operations. The moment custodians, they analyze that yes, they want to expand their operations and they are raising their voice, they are raising their request in front of SEBI. So keeping that in mind, SEBI said कि कोई बात नहीं, SEBI said कि कोई बात नहीं, I allow you to start or to expand your operations, but the moment you will be expanding your operation, it's going to be done in a different way. It's going to be done in a different way. It won't be done in a traditional way, the way you are thinking right now, the way you are witnessing right now. So what all changes have been announced, how these changes are going to be implemented, let's discuss them one by one. So before I start the discussion, there is a doubt. Sir, what is the benefit of lock-in and someone investing in mutual fund can select debit, equity or hybrid and carry on without any transaction? नहीं, आपने शायद पॉइंट को ही नहीं समझा. Try to understand the point. पॉइंट ये है कि अगर आप, प्लीज पे अटेंशन, पॉइंट ये है कि यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स which can be of different types in terms of open, closed, hybrid, or maybe equity, debit, hybrid, whatsoever it is, and it is linked to a folio. It is linked to a folio. Now this folio is a unique number which is mapped to all the schemes you have opted for, you as an individual, you as an entity. तो जितनी भी आपने स्कीम्स के साथ, जितनी भी आपने स्कीम्स में इन्वेस्ट किए, all the schemes, they are mapped to a single folio, and the moment you announce or you apply the lock-in on this folio, no debit of any of the scheme from this particular mapped account will be allowed, will be done. That is what is basically I'm talking about. तो यहाँ पे type of lock-in का कोई मतलब नहीं है कि इक्विटी है, डेबिट है, हाइब्रिड है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ स्कीम के फीचर्स हैं. They are the features of the scheme. I'm not talking about the features of the scheme. I'm talking about the entity which has applied, which has linked itself to multiple schemes, and if they come up with lock-in, no debit will be done. No debit का मतलब इस स्कीम को आप क्लोज नहीं कर सकते. इस स्कीम में जो आपके यूनिट्स हैं उनको बेचकर यहाँ से कैश फंड्स नहीं लेके जा सकते. दैट वोंट बी अलाउड ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो अगर आपकी जगह कोई और आया और उसने कोशिश की इन पैसों को निकालने की, दैट वोंट बी अलाउड, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो इंडिविजुअल है, जो ओनर है, उसने उस पर क्या लगाया? लॉक-इन लगा रखा. क्लियर हो गया जी? आई गेस समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. अब हम बात करते हैं कस्टोडियन की. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टोडियन इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी which is responsible to hold the financial instruments on the behalf of the financial institutes, on the behalf of the entities. Who all? Sir, entity like foreign portfolio investor, maybe a company, or maybe an individual. अगर आपके पास भी अच्छी खासी सिक्योरिटीज है, एंड इफ यू वांट कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है मैनेज करने का, मेरे पास टाइम नहीं है सिक्योर करने का, यू कैन गो टू दी
custodian, and custodian will handle, जो कि generally retail investors के केस में नहीं देखा जाता, but yes, portfolio investors, corporate investors, they park their security with the custodians, and against holding their security, against safeguarding their securities, they are receiving fees, they are receiving charges, which is the source of profit for them, which is a source of profit for the custodian. लेकिन अब सेबी ने कहा कि custodians, they can get involved in some of the other services as well. In some of the other services as well, and these other services will be termed as unregulated services. These other services will be termed as unregulated services, which means what I mean with the unregulated services, sir, unregulated services means not regulated by SEBI. तो SEBI ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो कस्टोडियन का फंक्शन कर रहे हैं, this function of custodian, that is already regulated by SEBI, and if a customer is enjoying service that is the core custodian service, that is pushed by me, that is secured by me, who am I? That is SEBI. But if you want to expand your operations, go ahead, but those services which you will be providing, that will be unregulated services, and you have to inform your customers, before providing them the services कि भैया ये जो services मैं आपको दे रहा हूं, these are beyond my earlier limitations, these are beyond my earlier operations, but these services, they are not regulated by SEBI. If anything goes wrong, SEBI will not be responsible. तो यहाँ पे एक तरह से आप ये समझो कि custodian entity एक ही है, but within that entity we have two parts. Within an entity only we have two parts. Legal entity एक ही है, we have only one legal entity, but within the entity we have two parts. पहला part which is operating independently, it is trying to maintain its accounts independently, it will try to maintain its net worth independently, and other, that is the unregulated service provider, that you can think it like a two different departments. ये दूसरा department है और ये जो दूसरा department है, it is maintaining its account separately. So this is how they are going to operate in the near future as per the latest announcement. अब इन announcements में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमें मार्क डाउन करने हैं, प्लीज पे अटेंशन, जल्दी से बता देता हूं. तो SEBI recently came up with the revision with respect to SEBI custodian regulations 1996, notified back in September 2025, और अब उसके लिए फाइनल जो सर्कुलर है वो आ चुका है in March 2026. In the modern security market, investors, especially the institutional investors, they don't hold their securities directly, rather on their behalf the securities are held by the custodians. So custodians are one such intermediary whose primary responsibility is to safeguard financial asset which is belonging not to itself, rather to its clients. Role क्या है custodian का? Sir, custodian is typically responsible for range of operational services which include, it is responsible for settlement of security trades, safeguarding of securities, monitoring corporate actions, maintaining investors' account, reporting account holding, and ensuring compliance with regulatory requirements. अगर मैं इंडिया की बात करूं, custodians they frequently service institutional clients such as foreign portfolio investors. उनके पास टाइम नहीं है, उनके behalf पर उनकी सिक्योरिटीज को इंडिया में custodian सेव करता है. म्यूचुअल फंड कंपनीज की सिक्योरिटीज को custodian सेव करता है. म्यूचुअल pension fund companies, insurance companies, and the other large financial institutes. इन सारे institutes ने जो भी पैसा different securities में invest किया है, तो सिक्योरिटी का जो अपना पोर्टफोलियो है, they hand over to the custodian कि भैया तुम संभालो. Their activities, अगर मैं custodian की activity की बात करूं, their activities are very closely linked to National Security Depository Limited या Central Depository Services Limited, because the both are repositories which maintain dematerialized security account. Because custodians, they are entrusted with safekeeping of large volume of financial assets belonging to investors, their operations involve substantial fiduciary responsibility and systematic importance. तो भैया जो मेरे पास बड़ी बड़ी value and volume of securities, I don't want them to be lie unchecked in my demat account. I want it should be given to the custodian who should be holding it, who should be saving it, जो मेरी सिक्योरिटी को अपने दिल के पास लगा के रखे, संभाल के रखे.
अब आरबीआई अभी सेबी ने क्या कहा, भैया हम आपकी एक्टिविटीज को सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या, कस्टोडियन मस्ट कंडक्ट एक्टिविटीज अंडर सेपरेट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो अब सेबी ने क्या कहा, कस्टोडियन विल क्रिएट सेपरेट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको मैंने डिपार्टमेंट दिया था नाम आपको समझाने के लिए, टेक्निकली इट्स अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट डिपेंडिंग ऑन वेदर द सर्विसेज फॉल विद इन और आउटसाइड रेगुलेटरी जुरिडिक्शन। तो यहां पे हमारे पास ये एक हो गया एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 2, दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी, दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। क्लियर हो गया। ईच यूनिट मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, the independent financial record, they should operate without cross subsidization as well as hidden transfers of financial resources. Via they both will operate independently without any mix up. Furthermore, when the custodian provide financial services that fall outside SEBI's regulatory scope, they must disclose this fact to the client. तो अगर आपने कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की to your customer which is not regulated by SEBI and it is coming under the category of unregulated services, then you must inform your client कि भैया मैं आपको सर्विस दे रहा हूं beyond my core operations, beyond my regular operations, because SEBI has allowed me, but SEBI is not guaranteeing it. It is the service which I am providing on my own behalf. अब यहां पे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या, तो जो आपका स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1 है, that is operating as per SEBI rules, which is holding the securities on the behalf of the customers, and ये जो securities है जिनके behalf of the customers पे इन securities को hold किया जा रहा है, there is a huge flow of data। अब एक तरफ strategic business unit के बाद बहुत सारा data है, और जो दूसरा strategic business unit है, अगर उसको ये data मिल जाए, if that unit gets that data, then it can expand its services। अगर मुझे पता चल जाए कौन सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है विच इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो आई कैन प्रोवाइड हिम विद द अदर सर्विसेज एज वेल ना, विच इज अलाउड टू मी बाय सेबी रिसेंटली। बट यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या कि सर भले लीगल एंटिटी एक है, भले कस्टोडियन एक है, लेकिन इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ गैप, देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट बाउंड्री, देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट वॉल। दे कॉल देम एज चाइनीज वॉल। Chinese wall matlab refers to internal information barrier designed to prevent confidential information from flowing between departments within the financial institution. For example, information about institutional investment position held by custodian must not be accessible to proprietary trading desk or research division. तो आपके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है which has been introduced by SEBI in the recent announcement in order to avoid conflict of interest. समझ आई ये बात? What is this Chinese wall? It is clear. The next is need to know principle requires that access to confidential information should be limited strictly to employees who require it to perform their duties. तो यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी के साथ शेयर करो जिसको वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ताकि जो ट्रांजैक्शन उसे करनी है, ताकि जो जॉब उसे करनी है, ताकि जो भी टास्क उसे करना है वो कंफर्म हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। यहां तक क्या न्यूज क्लियर है? सेबी ने क्या कहा कस्टोडियन से कि जो आप काम कर रहे थे बहुत बढ़िया, अब करते रहिए, इसके आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आप अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर इंक्रीजिंग योर ऑपरेशंस, आई विल अलाउ यू टू परफॉर्म सम अदर सर्विसेज, बट दो सर्विसेज विल नॉट बी रेगुलेटेड बाय मी, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म योर कस्टमर दैट दीज सर्विसेज आर नॉट रेगुलेटेड बाय मी, एंड यू विल बी मेंटेनिंग टू डिफरेंट strategic business units within the entity, and there will be a Chinese wall between them. There will be no sharing of information, there will be no flow of data or information from one business unit to another, from one department to another. अरे बोल यार, क्लियर है? सो गए हो क्या? उठ जाओ, सो गए हो क्या? उठ जाओ, बता दो। आपका तो पता नहीं, मेरी तो 6:30 बजे भी क्लास है, पेड क्लास है। आप लोग तो बता दो यहां तक ठीक है या नहीं, समझ आया या नहीं? जल्दी 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 बताओ। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ू कस्टोडियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है सर
custodian is allowed to outsource some of the services as well. तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर बोली गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आर इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग ऑपरेशन टास्क. ऑब्वियसली आज की डेट में हर organization they are trying to outsource their operational task. SEBI said you can go for it, but SEBI allows custodian to outsource only non-core functions. You can outsource only non-core functions. You are not allowed to outsource core business or compliance function. Core business मतलब safeguarding the security, कीपिंग दी सिक्योरिटी सेफ, उसके लिए भैया यू कैन नॉट आउटसोर्स. उसके अलावा अगर आप कोई सर्विस दे रहे यू कैन आउटसोर्स दी सर्विसेज. देयर इज अ फॉरम, द फॉरम नेम इज द कस्टोडियन एंड डीडीपीज स्टैंडर्ड सेटिंग फॉरम. इट इज कस्टोडियन एंड डीडीपीज स्टैंडर्ड सेटिंग फॉरम. ये जो फॉरम है इट विल डिटरमाइन विच एक्टिविटीज क्वालिफाई एज कोर एंड नॉन कोर. तो कौन सी एक्टिविटीज कोर है, कौन सी नॉन कोर है, उसकी लिस्ट this forum will provide in the upcoming days to go. Infrastructure requirements में पहले क्या था? If I talk about the history, earlier these custodians, they were holding the securities. Earlier these custodians, they were holding these securities in the physical form. And if they were holding the securities in the physical form, then they must have a good strong vault, ताकि भैया वहां से चोरी ना हो सके, कोई ले ना जा सके, कोई लेके ना जा सके. तो वॉल्ट की कुछ कंडीशंस थी, लेकिन सेबी ने कहा भैया अब उन कंडीशंस की जरूरत ही नहीं है. क्यों उन कंडीशंस की जरूरत नहीं है? बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज द सर्कुलर रिलैक्सेस द रिक्वायरमेंट फॉर वॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर कस्टोडियन डू नॉट होल्ड फिजिकल सिक्योरिटी. अगर आपका फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है तो वॉल्ट का क्या अचार डालोगे? हाउएवर इफ द कस्टोडियन होल्ड physical security, then you have to maintain the vault standard as mentioned earlier. Last but not the least, it says custodian must establish formal governance architecture which involve board level committees. Which all committees are going to be set up by the custodian? Audit committee, nomination and remuneration committee, as well as risk management committee, which will ease out the process, which will improve the day-to-day operations of the custodians over the period of time. Not only this, there has been a statement given that CFO, Chief Financial Officer, should periodically report to the audit committee on financial status as well as related party transactions and inter-corporate loans. इसकी जानकारी CFO को देनी होगी, इसे आपकी audit committee को. अब risk management के लिए क्या करना होगा सर? Operational risk arises from failure in systems, processes or human error. Legal risk emerges from contractual disputes, so please check them to avoid it. Circular requires custodians to implement structured risk management policies that identifies risk earlier. So यहाँ पे कहा गया custodian को कि भैया risk management policies apply करो ताकि you can identify the risk early, you can assess the risk and you can mitigate it whenever required. Additionally, custodian must monitor suspicious financial activity. Custodian के ऊपर कंडीशन है, you must monitor suspicious financial activity. और जहां आपको लगे कोई ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी है which is suspicious, do report to the financial intelligence unit India. ठीक है जी, financial intelligence unit India. So this reporting forms part of India's anti-money laundering framework. तो अगर आपको लगे कोई भी ऐसी suspicious transaction, इन्फॉर्म कर दो. अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? कस्टोडियन मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 1.2 टाइम्स द एवरेज ट्रांजैक्शन लोड ऑफ प्रीवियस ईयर. अगर आपका प्रीवियस ईयर का एवरेज ट्रांजैक्शन लोड 100 था तो अब आपके पास 120 ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने का कैपेसिटी होनी चाहिए. दिस विल इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑट टू बी मेंटेन एवरी ईयर. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो भी इंक्रीज हो रहा है इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो भी इंक्रीज हो रहा है इन दी demand for technology infrastructure, that can be fulfilled over the period of time. Last point है, अगर custodian financially unviable हो जाए या custodian is in loss, then it cannot continue anymore to provide services to its client. So custodian उस केस में क्या करेगा? If the custodian is not fit to continue the operation, then custodian must therefore create contingency plan. Custodian must create contingency plan. You should create a contingency plan to ensure that client का जो asset है that should be transferred to another SEBI registered custodian, because you cannot handle it anymore because of your current financial structure. Where the
wind down occurs due to regulatory enforcement or erosion of net worth, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो आपका strategic business unit है under the SEBI jurisdiction, that should always have a net worth of 75 crores. अगर उससे नीचे जाएगा तो obviously you will not be treated fit to operate or you will not be treated fit to continue the function. Is it clear, everybody? So these are some of the points which I need to remember. Last is the circular is going to be implemented and it is going to be effective from 26th of March 2026 or March 2026, and it will be valid until March 2029 before any transaction is done. So custodian have until September 2026 to implement the orderly wind down framework and until March 2029 to establish compliant disaster recovery infrastructure as well. So March 2029 tak you have to establish the compliant disaster recovery infrastructure as well, which will counter the losses in the near future to go. ठीक है, उसके अलावा ये जो डिजास्टर रिकवरी वाला पॉइंट है ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा. अब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान में एक पॉइंट और कहा गया, डिजास्टर रिकवरी अग्रीमेंट्स says that what is custodian? Sir, it is holding the data, it is safeguarding the data. तो यहाँ पे एक पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या? It mandates that there should be a creation of disaster recovery site, which should be located geographically in separate area from primary data center. जो आपका primary data center है उससे दूर कहीं यहाँ पे disaster recovery site बनाओ. Ideally ये जो site है that should be in different seismic zone. If not feasible, then the minimum separation should be 250 kilometers. या तो seismic zone ही different हो या फिर minimum जो distance हो that is 250 kilometers. Custodian must conduct periodic disaster recovery drills कि भैया अगर कल को कुछ disaster होगा, will I be possible to recover the entire data from this disaster recovery site or not? अब ये distance क्यों रखा? सर क्योंकि अगर कोई natural disaster है तो वो physical distance can save the issue. अगर डेटा सेंटर फेल भी हो गया तो एटलीस्ट डिजास्टर रिकवरी साइट से यू कैन रिकवर दी डेटा इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस. क्लियर हो गई पूरी कहानी? तो पूरी कहानी बड़ी सिंपल है. कस्टोडियन जो है अब वो एक ही यूनिट के अंदर डिफरेंट यूनिट सेटअप कर सकता है. वन इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1 विच इज अंडर सेबी, सारी वो सर्विसेज जो सेबी अलाउ करता. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 2 वो सर्विसेज जो सेबी रेगुलेट नहीं करता लेकिन अलाउ करता. कल को कुछ गलत हुआ, सेबी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, सेबी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, बट यस हियर सेबी विल बी रिस्पॉन्सिबल. दिस इज द मेजर अनाउंसमेंट विच इज डन. इससे होगा क्या? सो फॉर द कस्टोडियन द न्यू वेन्यूज टू अर्न प्रॉफिट, द न्यू वेन्यूज टू अर्न रेवेन्यू विल ओपन अप एंड देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल इंप्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Consider the following statement. Custodians that are not banks, they must segregate financial services into separate strategic units when activities fall inside and outside SEBI regulatory jurisdiction. तो याद रखना जो custodians हैं, bank can also have a license. Bank can also operate as a custodian, but if it is a non-bank financial institute which is a custodian, then in that particular case, separate business unit is going to be marked. Custodians are allowed to outsource non-core business activities, not core business activities. Custodian must implement Chinese wall and need to know principle. True. Maintaining physical vault is mandatory. No, it's not mandatory. It is only required if there is physical security holding. Custodian must report suspicious transaction to financial intelligence unit. That is correct. So keeping that in mind, 1, 3 and 5, that means A option is the correct answer for the given one. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? अगर कोई डाउट तो पूछ लो. सर एक क्वेरी थी, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में रीजनिंग किस लेवल की है? रीजनिंग यार आपके एसबीआई पीओ मेन से भी अच्छे लेवल की आती है, तो तैयार रहिए, उस लेवल पे पढ़िए ताकि एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस की रीजनिंग आपको हलवा लगे, इजी लगे. दैट इज अ पॉइंट. ठीक है जी. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लो. हियर इज द स्क्रीनशॉट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन which you are going to solve as a homework. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. टेक द स्क्रीनशॉट, try to solve it and give me the answer in the comment section once the session is complete. 1, 2, 3, 4, 5. I hope you have taken the screenshot. This is the first question. Second question is now on your screen.
Take the screenshot. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here you go. This is the second question. Do solve both the questions. Give me the answers in the comment section and I'll update you whether the answer is correct or not. Do join the Telegram channel by the name exaMnorM, and even we have a Telegram channel by the name Economics by Madhav. दोनों में से कोई भी channel आप join करिए. You will be getting updates regarding all updates. You will get updates of all related to RBI Grade B and exaMnorM format. If you are preparing for RBI examination, then we have 3 courses live. One is RBI Norm, which is a complete course for phase 1 general awareness and phase 2 complete. If you only want to practice with us the descriptive part, we have RightNorm live only for descriptive, where we will be coming up with 60 plus live classes and more than 180 questions with descriptive sample answers with their feedback. And if you are only looking for current affairs, then we have currentNorm as well. All the 3 courses are live. The link for the course is given in the description below. Bye bye guys, take care, good luck, God bless you all.